Hello, Srushti. A pleasant good evening to this session with regards to your way from GPAT 4 digit rank to NIPER triple digit and something like GAT-B जो शायद बहुत कम लोग लिखते हैं, बहुत कम लोगों को idea about advantages and all. But before we get started, what was the major inspiration for this entrances? कब ये start हुआ? When did you plan to target this entrances? Okay, so I decided to aspire for NIPER after my second year. Until second year, I had decided that I am going to continue with pharmacy field, and I want to do post graduation in something in pharmacy. And that's why I decided to go for GPAT, NIPER, that route. And that was the time when I was introduced to PHARMAELITE classes through WhatsApp message, and then I joined PHARMAELITE classes. And the way you teach and the other faculties teach inspired me to study hard for NIPER and, as always you say, for AIR 1. How was the entire things being lined up? Like you were writing multiple entrances. I suppose you wrote GAT-B, you wrote other entrances of different colleges as well. So how was that entire journey shuffling from one paper to another paper or फिर वापस अरे और एक entrance. So how much difficult was it to balance your mind in that entire process? It was really difficult because all these exams were going on during our college exams, university exams. The first exam which I wrote was GATE Excel and GATE BT. Since I was interested in biotechnology from the beginning, I gave GATE BT also, and then JAM exam. These three exams were the most early ones which I gave in April, I guess. And then all these exams followed by the college exam. So it was really stressful during the period because GPAT का डेट नहीं आ रहा था, and then we were all stressed that postpone हो रहा था, college exams का भी एक paper postpone हो गया था. But then as we were continuing with our lectures, your words always motivated us to keep trying and keep studying, and that's why it was easy to come out of that stress and continue with our studies. And बहुत सारे exams तो थे, मतलब every exam has their own exam pattern, type of questions which were asked during the exam. So every exam, before every exam, आपने जो भी suggestions दिया कि this is the pattern of questions which every time they repeat. So I tried to study those questions, those concepts in thorough, and that's why I could crack those exams. How did PharmaElite notes टेस्ट सीरीज हेल्प यू इन द एंटायर प्रिपरेशन? मतलब क्या आपने पूरे प्रिपरेशन में फोए ओपन किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए? पोए मैंने सेम 4 के बाद द एंटायर बुक आई बाइड बिकॉज आई थॉट कि वहां से मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. बट ऑनेस्टली आपने जितना बोला कि फ्यू ड्रग्स का ही पढ़ना है, लाइक क्लोनिडिन का पढ़ना है या फिर अल्फा टू अगोनिस्ट का पढ़ना है, उतना उतना पार्ट जितना आपने बोला उतना मैंने फोए से पढ़ा. एंड बाकी फार्माकोलॉजी फ्रॉम केडी एज यू सेड. एंड फार्माइलाइट नोट्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज एक तो वो ऐप में है, एंड ऐप इज वेरी हैंडी इन मोबाइल. एनी टाइम वी कैन रीड इट वेल ट्रेवलिंग थ्रू लोकल, और घर पे भी बैठ के एनी टाइम यू कैन एक्सेस इट. ऑल्सो ऐप हैज ऑल द नोट्स सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज्ड into different categories, so it's very easy to find whichever concept you want to read at that time. And apps actually has those PPTs and the points are highlighted in a way that they're actually important concept. ऐसा नहीं कि मतलब केडी से उठा लिया और कुछ भी हाईलाइट कर दिया, बट दोज important highlighted things like किसी ड्रग का साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, आई रियलाइज लेटर दैट क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम दैट पार्ट. एंड बिकॉज आई हैड रेड दोज हाईलाइटेड पार्ट्स ड्यूरिंग माय रिवीजन, मेरे को वो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हुआ. Since you spoke about KD Tripathi, was it that जैसे हम लोग कोलॉजी के लिए KD Tripathi रेफर कर रहे थे, was there a need कि भाई मैं फिजिकल फार्मेसी के लिए मार्टिन पूरा पढ़ूं, सत्यनारायण बायोकेमिस्ट्री के लिए पूरा पढ़ूं, ब्रह्मनकर बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए पूरा पढ़ूं, और was our notes and live lectures more than enough? नोट्स आर मोर देन इनफ, एंड लाइव लेक्चर्स मतलब जो भी बचता है नोट्स में से लाइव लेक्चर कवर इट ऑल. मतलब जो भी इम्पोर्टेंट एक आध दो कंसेप्ट थे जो आपने बोला कि बुक में से पढ़ो, ब्रह्मणकर में से या सत्यनारायण में से, केडी में से, आई जस्ट रेफर्ड फॉर दोज कंसेप्ट. इनिशियली यू आस्क अस टू रीड this topics, you can read from the book, उतना मैंने पढ़ा. एंड अदरवाइज नोट्स आर जस्ट सफिशिएंट. उसके बाहर मतलब दूसरा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती.
हाउ अबाउट क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग पैटर्न जो हर एक एंट्रेंस वाइज था? बिकॉज आई सपोज आपने गैट भी लिखा, गैट बी का नेगेटिव मार्किंग सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, मणिपाल हाँ. का GPAT goes hand in hand, Niper goes hand in hand, but GAT-B being a totally different exam with partly I suppose few topics as a syllabus from 11th 12th as well. तो वो एडिशनल सिलेबस, वो टॉपिक्स, उसके लिए टाइम कैसे फ्रेम किया? क्योंकि लोगों को 4 साल का GPAT सिलेबस पढ़ने को ही टाइम कम पड़ता है। ऐसे में गोइंग टू समथिंग व्हिच यू डिड बैक 4 years from now, how much easy or difficult was it for time management? सो गैट बी का अलग ऐसे है कि इट हैज टू पार्ट्स बेसिकली, पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो पार्ट ए इज द पोर्शन विच हैज बीन कवर्ड इन 11th एंड 12th. सो उसके लिए मैंने हमारे जो वीडियोस पे यूट्यूब पे वीडियोस है लाइक बूस्ट योर बेसिक्स एंड ड्रग ऑफ द डे, उसमें से मैंने पढ़ा, दैट वाज मोर देन इनफ. एंड मेरे को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पार्ट ए से में से सब क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करने हुआ. दोज वर द क्वेश्चंस which were revised in those videos. And part B is something related to biotechnology, immunology, and those questions or concepts were covered in our live lectures and notes. दैट पार्ट इज सिमिलर टू जीपैट और नाइपर प्रिपरेशन. बहुत सारा मतलब कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी लेक्चर्स के टाइम हो गया था. एंड एक्चुअली ऑनेस्टली मेरे को गैट बी एग्जाम के बारे में पता ही नहीं था. आई थॉट दैट माय सब्जेक्ट इज नॉट देयर इन आईसीटी, इसलिए मैंने आईसीटी को रूल आउट कर दिया था मेरे लिस्ट में से. बट इट वाज ड्यू टू यू एक्चुअली दैट आई गॉट टू नो अबाउट गैट बी. एंड मतलब इतना गैट का जब मेरे को पता चला तब उसका फॉर्म्स ऑलरेडी ओपन हो गया था. एंड आई कुड हैव मिस्ड इट जस्ट बाय 2 days. एंड दैट वाज माय ड्रीम, दैट इज माय ड्रीम कोर्स एक्चुअली, बायोटेक्नोलॉजी. तो वो पता चलने के बाद आई हैड 1.5 month. उसमें मैंने वो बूस्ट योर बेसिक्स वो तो मैं रोज देखती थी. एंड बाकी कंसेप्ट आई स्टडीड फ्रॉम ऑन ऐप. देयर इज एक्चुअली अलग से कैटेगरी है गेट के लिए, उसमें गेट बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स है. सो आई स्टडीड फ्रॉम दैट पार्ट from PHARMAELITE app, and that made my concepts clear, and also it became easy for me to attempt both the parts in GAT-B. Let's go almost 2 years back from now when you started preparation. तब क्या लग रहा था एंड आज जो हुआ है, हाउ मच इट इज क्लोज टू व्हाट यू ड्रीम्ड ऑफ? पहले तो जब when I started with the preparation, I didn't had idea कि whether I'll be able to sit for counseling for NIPER. पहले तो GPAT क्रैक करना ही मेरे को लग रहा था कि होगा कि नहीं. But then the first lecture I sat was your lecture of OC, and तब मेरे को लगा कि no, I can do OC. मेरे concepts भी clear हो सकते. It's just because of you actually that my OC concepts are clear. And जब उसके बाद धीरे धीरे प्रिपरेशन चालू किया. उसके बाद एट पॉइंट जीपैट के टाइम मेरे को लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा कि नहीं. एंड जीपैट का बहुत सारा स्ट्रेस भी था. बट एज यूजुअल लाइव लेक्चर में आपके मोटिवेशनल वर्ड्स थे, एंड दैट केप्ट अस स्टडीइंग, कीप स्टडीइंग एंड नॉट टेकिंग एनी स्ट्रेस. और वो पढ़ा, जीपैट का रिजल्ट आया. 4 digit रैंक था मेरा. बट एज यू सेड कि जीपैट का 4 digit आया रैंक, इसका मतलब ऐसे नहीं कि नाइपर क्रैक नहीं हो सकता. सो आई जस्ट लिसन टू यू, केप्ट स्टडिंग, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर विथ गुड रैंक इन नाइपर. A jump from 1871 to 224, almost 1500 1550 रैंक का जंप है. सो वाज इट दैट टाइम तो ज्यादा मिला नहीं था हमको जीपैट और नाइपर के बीच में? आई सपोज वी हार्डली हैड अ मंथ. सो हाउ वाज दैट? पहले तो मेंटल स्टेट से बाहर आना था, बिकॉज ऑल्दो वी मेड सम एरर्स इन पेपर, बट देन देयर वाज द अदर साइड ऑफ इट कि भाई पढ़ा तो सब कुछ था. वो जो एंड स्टेज था जहाँ पे वी हैड टू बी केयरफुल विद द अटेम्प्ट्स, दैट वेंट प्लस माइनसेस. But stabilizing yourself in the moment in that 30 days, reading those extra things for Niper, forgetting what happened, and getting ready for what was required. How much tough it was that in a short span to be done? It was really tough because number of days were less, and we had to come out of that mindset कि हम लोग GPAT qualified है कि नहीं. During first sniper we didn't knew कि GPAT qualify होने वाले है कि नहीं. And but those were the days where we completed our revision, and revision lectures really helped in because GPAT के टाइम ऐसे हुआ, I realized that many of the questions went negative. And that's why I understood that I have to revise my concepts. And revision lectures really helped me because those lectures tapped in the questions actually from which the NIPER 2 questions came from. And revision lectures and test series really helped me for cracking this NIPER.
How about the speed of revision lectures? I mean, daily we had almost an hour, kabhi half an hour to 45 minutes to kabhi 1.5 hour. How much difficult और easy it was? क्योंकि वो जो पेस पे चलता था, probably वो 4-5 चैप्टर कवर करने को हमने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था, it took us 12 to 15 hours, शायद 20 hours as well, depending upon the topic together. And now that same thing we were doing in a span of 45 minutes to an hour. So how much different it was to get through with what was required and what we were doing. तो जब एक्चुअल लेक्चर्स थे तब तो स्पीड स्लो था, मतलब फर्स्ट टाइम वी वर लर्निंग दोस कंसेप्ट, बट ड्यूरिंग रिवीजन लेक्चर्स इट वाज लाइक 4 times द स्पीड ऑफ नॉर्मल लेक्चर्स. बट एक्चुअली इट वाज रिक्वायर्ड बिकॉज पूरा सिलेबस हम लोगों ने 1 month पीरियड में 20 days में कवर किया. एंड for the first 20 days we completed the entire syllabus revision, and then in next week we completed the entire revision again. So that was actually very stressful, but it helped in because 2-3 बार उसका revision हुआ, then those concepts fixed in our mind, and that's why we could solve those questions in less time. Niper में it's important that you solve questions quickly and not taking much time on single question. So this revision which we did 2 to 3 times, that helped in. How about that 200 questions and 2 hours game? Did we take 2 hours to go through the entire paper कि उससे पहले हो गया था? uh, if we practice many questions before NIPER, if we solve many papers, then it doesn't really take 2 hours. It just takes 1.5 hour, and utna bhi nahi lagta actually. I completed my paper in 1 hour 15 minutes, and then the remaining time I used to solve some tricky questions which I had left in first round. As you say, we solved the question paper in 3 rounds. The first round is where we can solve the questions easily. Second round are the questions which we have to think about, which we have to give some time, and the third round is where we don't know those questions. So the remaining 45 minutes I used to solve the third round, where I didn't know those questions and I had to think about it. So इतना time तो नहीं लगता, हो जाता है. How was our test series portal helpful with regards to analyzing amount of time on a question? Then our chapter specific paper to subject specific paper to a semi full length test paper to cluster papers and to full length. So how was that helpful in the entire process, especially cluster papers? So subject-wise papers had questions, a few questions, those which I had read those concepts from KD and I know those answers. So baki questions were which I had never seen. So I could understand and tap upon the concepts which I had never read, and that add upon to my knowledge. And semi full length questions and cluster questions, especially the cluster papers, we didn't knew actually which topics it covered. So when I solve a cluster paper, I get to know that which concepts are going on wrong or which concepts I'm going right. And also after every paper during the result you get the time analysis, that how much time I have spent on a single question. So based on that analysis I can work upon my speed, which is important in NIPER. And how about numericals and all? Numerical में starting से do you prefer to invest time in और वो questions को end में रख देना चाहिए to go at a go? So my method was that numericals, if it is just I have to put some formula, I have to put values in formula and then I get the answer, then I solve that numerical during the process. But if I see that this numerical requires some कुछ है मतलब trick है उसमें, then I keep it aside and then I solve it in the second round. But most of Do the you questions in NIPER were direct questions, जहाँ पे direct formula में values डालने थे और वो easily हो जाते थे solve. हाउ अबाउट द टाइम फ्रेम जो नाइपर के पेपर 1 में हुआ था? पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, फिर बहुत लोगों को वापस सेम डे वही पेपर सॉल्व करना पड़ा था, सबमिट नहीं हो रहा था. तो सो हाउ मच फ्रस्ट्रेटिंग वाज दैट? एंड वापस 15-20 दिन बाद वापस नाइपर का एग्जाम था एंड वी हैड टू बी केयरफुल ऑन द प्रोसेस कि यहाँ तक आ गए तो अब भी गिव अप करने का कैसे सोच सकते हैं? Right. First sniper के time that I could attempt only 145 to 146 questions, and paper के बाद तो मैं बहुत frustrated थी कि सर ने तो बोला था कि 180 questions तक attempt करना है, मेरे तो उतने हुए नहीं. Then हमको समझा कि 1 hour extra मिल रहा है कुछ technical error के वजह से. फिर उस 1 hour में मैंने कुछ extra 10 to 15 questions solve किए,
and then we realized कि exam is cancelled. So we were just so much frustrated कि अभी ये 2 घंटे का एग्जाम मतलब वापस देना पड़ेगा, अभी जो क्वेश्चन आएगा that will be difficult or it will be easier or what it will be, वापस टेक्निकल इशू तो नहीं आएगा. But as always your words were always with us, keeping us motivated. हम लोगों ने वो 10-15 डेज में बहुत सारा रिवीजन एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए एंड एक्चुअली आई रियलाइज कि मेरा स्पीड थोड़ा सा कम पड़ रहा है. So I solved many papers during those 10-15 days from PHARMAELITE website, and that actually helped me to solve more questions in NIPER 2. In NIPER 2 I solved around 180 questions, 179 questions I solved. How much question papers did you attempt before writing the entrances? I mean, अपने वेबसाइट पे जितने questions थे सब solve कर लिए थे और कुछ selected किए थे and few were pending. How was it? सो द सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे, वो तो मैंने जब चैप्टर लाइव लेक्चर में चल रहा था, आई सॉल्व दोस पेपर्स ड्यूरिंग दैट टाइम. देन आई सॉल्व ऑल द क्लस्टर पेपर्स, देन आई सॉल्व द सेमी full length, and at the time of GPAT I had solved all the papers which were there on website. And for NIPER I started again with those cluster papers and full length papers of GPAT, also full length papers of NIPER, cluster papers of GPAT, and few extra papers which are also there, like for extra information apart from pharmacy, the questions which came in part A, 40 questions related to aptitude, all those few papers are also there on website which tap upon these questions. So I also solved those papers, and solving more number of papers helped me to increase my speed. Comparatively, how many questions could we say were somewhere a part of something what we did either in live lectures or from our notes or from our test papers? What was that ratio overall? Majority questions, I can say more than 100, questions with those which I had already solved during test papers. Many questions of pharmacology, like some side effects or contraindications, were directly from the PPT, highlighted parts in the PPT, which I could remember because I read it during revision. And also the tables, which are concise tables, which are given in soft copy notes, like tablet ka excipients and all that. Direct questions were there on those parts, and that's why I can say that PHARMAELITE notes are helpful, and I can say they are more concise and help you to learn or remember those concepts quickly. Coming to the most important part, mind balancing, from something what I already asked you just few minutes back. But then talking about attempting that paper immediately within 30 days, that journey where I hope even you would agree, GPAT up आराम से डिजर्व करते थे ट्रिपल डिजिट. देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट दैट. तो उस फेज में, बिकॉज आई टेल यू, अगर मैं खुद की बात करूं, बैक इन my 8th standard when I was 14 years old, 14 years back from now during school days, एक पेपर में खराब जाता था तो नेक्स्ट डे सेमेस्टर का एग्जाम होता था, तो वी स्टिल यूज्ड टू बी इन दैट प्रीवियस पेपर, कह रहे यार ये तो खराब चला गया. सो वो माइंडसेट को कैसे ब्रेक किया कि बॉस दिस इज डन, आई कैन नॉट चेंज इट, बट दिस इज येट टू हैपन, लेट अस चेंज दैट, वो कैसे बैलेंसिंग किया? यस, तो एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया था फार्माइलेट 2 years बैक. सो जब मैं क्लास में थी तो मेरे सामने एक बैच पास आउट हुआ, और तब आप उनको जो इंस्ट्रक्शंस देते थे कि जस्ट डोंट फोकस ऑन योर जीपैट रैंक, कीप स्टडिंग फॉर नाइपर, वो तब भी सुना था और वो माइंड में फिट हो गया था कि जब हमारा टाइम आएगा जीपैट में कुछ भी हो, वी हैव टू कीप स्टडिंग फॉर नाइपर. एंड जब एक्चुअली हमारा टाइम आया, आई वाज इन दैट फेज कि मेरा क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा. बट स्टिल ऑलवेज इन लाइव लेक्चर्स आप बोलते थे कि यू हैव टू कीप स्टडिंग. एंड इट्स ट्रू दैट जीपैट अभी हो गया है, वी कैन नॉट, we don't know that क्या होगा क्या नहीं, but नाइपर is in our hand. नाइपर का पढ़ाई करने के लिए even we got those 15 days extra. So I decided that whatever I'll do, I have to attempt this test with full confidence, and इसलिए मैंने वो 15 days में, like, I studied for more than 12 hours a day and practiced more than 2 to 3 papers every day, and that's what made a change in rank. Lastly, what makes PharmaElite different than others and became the choice of you for your preparation?
इसका आंसर मतलब एक ही है, धर्मेश सर. दैट मेक्स फार्माइलाइट डिफरेंट. एंड आई वुड से दैट मैंने इस बार कुछ अलग किया नहीं. आई जस्ट लिसन टू यू. जितना आपने बोला उतना ही किया, जितना आपने बोला उतना सब किया, जैसे आपने बोला वैसे किया. एंड योर वर्ड्स एंड द वे यू टीच, इट्स वेरी फ्रेंडली मैनर. एंड जो भी आप सिखाते हैं वो माइंड में एकदम से फिक्स हो जाता है. द वे यू क्लियर ऑल डाउट्स, द वे यू आर ऑलवेज रेडी टू सॉल्व ऑल द डाउट्स, and the way the doubts are solved in less amount of time, जब भी चाहिए तब you are available to resolve any of the concepts. That makes Farmailite different. Lastly, first of all, a big thanks. And lastly, what is it which you would like to pass on as a message for the upcoming NIPERians and your PHARMAELITE juniors as well? I would like to say that ज्वाइन करने के बाद बी कंसिस्टेंट विथ योर वर्क. ऐसे नहीं कि कॉलेज का कुछ प्रोजेक्ट आ गया, एग्जाम आ गया तो लेक्चर्स अटेंड नहीं किया. इफ मतलब इन वर्स्ट केस यू डोंट गेट टाइम टू स्टडी, एटलीस्ट लिसन टू द लेक्चर्स एंड अटेंड दोज टेस्ट सीरीज और अटेम्प्ट दोज पेपर्स विच सर सेज टू डू ऑन टाइमली बेसिस. एंड वही आई वुड लाइक टू से जस्ट लिसन टू धर्मेश सर एंड अदर फैकल्टीज. जितना बोल रहे उतना ही करो, because I have observed that these exams have a पैटर्न कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चंस हर बार आते ही है. सो दैट वी हैव टू स्टडी एंड सॉल्व दोस पेपर्स. बट फार्माइलेट में ऐसे है कि ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी स्टडीड एंड एनालाइज्ड बाय द फैकल्टीज एंड दे हैव गिव यू ऑल दिस material and it's literally spoon fed to you. So just take advantage of it and study in a slow and steady manner. You will surely achieve your goals. Thanks a lot, ma'am, for your valuable time. Looking forward to trouble you again in future for your upcoming juniors. And once again, congratulations. Thank you, sir.